भक्तों की पहचान कैसे होती है कि उनके मुख से क्या प्रसाद निकलता है, जिसका प्रभाव उनके आसपास के लोग कर लेते हैं। कितने लोगों पर उन्होंने उस प्रसाद का वितरण किया, उनके जो मुख से प्रसाद निकला है उससे कितना प्रभाव पड़ा। तो उनके मुख से ऐसे बहुत प्रसाद निकले हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने उत्साहित किया है, बहुत से लोगों को भक्ति में जीवन में लगा के रखा हुआ है। जब ऐसे भक्तों का संग मिलता है हम लोग को, तो उनकी वाणी के माध्यम से जो उनकी चेतना है और बाकी कीर्तन अभियान के प्रति जो उनकी दृढ़ता है, उनका जो गंभीर अध्ययन श्रवण कीर्तन और दासानुदास के भाव में सेवा करने की जो भावना है, वही भावना उनकी वाणी के माध्यम से हम लोग कानों से हमारे हृदय में समाहित होती है। जैसे भक्तों का हृदय स्वागत करना चाहिए हम सबको। भगवान के नाम का आश्रय लेकर उनको स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Prabhuji, whatever he said, I'm not like that. Whatever if I did even 1%, I think it is because of Prabhu's guidance and their inspiration. Because really, from my heart, I can say, Prabhuji का हम लोग हर एक हफ्ता भागवत सुनता है। This is what they're waiting for. प्रभु, आप मैं आपका पास में बैठा है, जो भी है ट्रांसलेट करता है। वैष्णव का कृपा है, लैंग्वेज डिवोटी का साथ हम लोग बैठेगा सब आ काम करने का टाइम थोड़ा बात करके अपने भक्तों लोग का साथ बात करते हैं। इतना अच्छा नहीं हिंदी, कभी कभी बीच में और रेस्पेक्ट का ये वर्ड नहीं है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। हाँ यस प्रभु, कंटिन्यू विद दिस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोग गुस्सा नहीं होने प्रभु जी बोला है अच्छा वैष्णव का एटिकेट इसके लिए प्रभु जी ने बुलाया, गलती किया है। बहुत गर्मी पड़ रहा है, क्या बात है? कुकिंग चल रहा था इसलिए वजह से। अभी मौसम ठंडा हो गया ना। हाँ, बाहर में ठंडा है अभी सेंट्रल एशिया हम लोग का मालूम है भगवान का समझने के लिए बहुत मुश्किल है हमेशा हम सब, लेकिन आचार्य लोग ऐसे more than understanding Krishna, we understand the devotee. We try to interact with devotees. The devotees give us inspiration. हम लोग का भक्त लोग का चरित्र हम लोग पता है, हम लोग का वो जगह निष्ठा मतलब देखा है। इसके लिए प्रभु जी बहुत लोग हम लोग भक्त लोग हैं, प्रभु जी है, हम लोग वो उस तरह से हम लोग का देखा है भगवान का ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और भगवान जी कहता है आदि पुराण पे, जो भी anyone says that I am Krishna's devotee, Krishna is saying they are not my devotee. But anyone who says I am my devotee's devotee, they are my actual devotee. In that way I can see Nabula devotees, they are serving the devotees. आप लोग भक्त लोग के लिए बहुत सेवा करता है बहुत साल से भगवान is very happy because you are serving the devotees by cooking prasad, serving them. Sitting here and talking is easy, but doing seva is not easy. In that way, I offer my very humble pranams, respects to all the devotees who are serving here, and I wish that I also get this mood, either in this lifetime or in coming lifetime. At least I get this mood to do like that kind of seva to devotees. I think that is very most important prayer. I pray on this part of Lord Speaker Shri Radha Krishna to serve the devotees. That which you are already doing. Hare Krishna. तो विचार है कि बहुत प्रभावित है आप लोग की सेवाओं से। भगवान कहते हैं आदि पुराण में कि जो आपके कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है।
लेकिन जो कहते हैं कि मेरे भक्तों के भक्त हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनको मैं अपना महानतम भक्त मानता हूँ। उसी प्रकार आप लोग जो कि बाकी भक्तों की सेवा कर रहे हैं, प्रसादम बना करके कई कैंप में प्रसादम जाता है, आप लोग के द्वारा कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप बनाते हैं प्रसादम, तो आप लोग भक्तों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो भी करें कि मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज इस हॉल में यहाँ पर अक्षरधाम प्रसादम में तो यहाँ पर मैं श्री राधा माधव जी से ये विनती करता हूँ कि मुझे भी ऐसा आप जैसा भाव प्राप्त हो उनको की सेवा करने का, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके आकर के बोलना तो लिए आसान है। जब कृपा जी की पुस्तकें पढ़ते हैं उनको बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी सेवा करना ये कठिन सेवा है। और हम लोग भी लोग करें कि मैं भी अच्छा करता हूँ कि ऐसा भाव आपके ऐसा सेवा का भाव मुझे अंदर Thank you. Actually, you are supposed to give class and I am supposed to listen, but it is reverse. Because tell you everything is good. तो कह रहे हैं कि सब कुछ उल्टा चल रहा है कल युग में। होना क्या चाहिए कि चूंकि आप इतनी सेवा कर रहे हैं, आपको आके यहाँ पे बोलना चाहिए, और जो हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं उनको बैठ के श्रवण करना चाहिए आपसे। कल युग में सब कुछ उल्टा हो रहा है, इसलिए उल्टा चल रहा है यहाँ पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च रामादेवी वैष्णवी नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी भाषा संप्रसाराय भूतं करोति वाचाले भगवन्मन्ये कृपादमोगे श्री गुरु दीनदयाल परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। I was told by Prabhu that I can give any topic, so you can start okay for you to give discussion. प्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना में बहुत से विषय वस्तु हैं, हम लोग किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक उचित है। So you all know Bhagavad Gita is a very transcendental book. In Bhagavad Gita there is 3 sections. The first section, Arjuna's confusion. Second is inquiry, and third he takes a clarity, like he gets a clarity. So that is the whole Bhagavad Gita. 3 sections are being there. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवद गीता दिव्य शास्त्र है, और अगर हम देखें उसको एक पहलू से तो उसमें 3 प्रमुख संदेश मिलता है। पहले हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो बहुत संशय में रहे, शुरुआत में संशय में है वो, उसके पश्चात वो जिज्ञासा करते हैं और उस जिज्ञासा के माध्यम से जो उनका संशय है, शंका का समाधान करते हैं।
सुन पा रहे सब लोग विजय सर? So if you see in verse number 2, verse chapter 2, verse number 7, we can see that Arjuna is actually explaining, expressing his confusion. Chapter 2, verse number 7. तो अध्याय 2 और श्लोक संख्या 7 में अर्जुन अपने शंका, अपने संशय को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of necessary weakness. In this condition, I am asking you to tell for certain what is best for me. Now I am your disciple and so surrendered unto you. Please instruct me. So this is the expression of Arjun to Lord Krishna about his confusion and seeking for his advice. तो अर्जुन कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 7 श्लोक में कि मैं बिल्कुल धर्म के मामले में इसमें मूल हो चुका हूँ, भ्रमित हो चुका हूँ, संशय में हूँ, मुझे ज्ञात नहीं है मेरे लिए क्या परम श्रेयस्कर है, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ. आप मुझे मेरे श्रेय के बारे में बताइए, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए. So there were so much discussions where Lord Krishna enlightened Arjuna, and 18th chapter, 73rd verse, Arjuna is getting the clarity, and it's a very, very important verse where Arjuna is expressing that all his doubts are clear. It's a very important verse. Arjuna uvacha nashto moha smriti lagga prasadat maya chita hitosmi gate sandeha karishye vachanam tava. It's a very, very important verse where Arjuna is dispelling all his ignorance and getting full clarity on what is supposed to be done. और फिर पूरे भगवद गीता में भगवान को ज्ञान देते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, और अंत में भगवद गीता के अंत में 18वें अध्याय के 3वें श्लोक में अर्जुन भगवान से श्रवण करने के पश्चात कह रहे हैं कि अब मेरा जितना भी भोग था वो सब नष्ट हो चुका है, मेरी स्मृति वापस आ चुकी है, मैं अपनी स्थिति में वापस आ गया हूँ, और मेरी स्थिति क्या है कि आपके वचनों का पालन करूं, अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं. So here the Acharyas explain in a very beautiful way, or very interesting way you can say. Arjuna, after hearing this entire Bhagavad Gita from Lord Krishna, he is seeing Lord Krishna's smiling face, and he is telling this first verse, Nashto Moho Smriti Lagga. तो यहाँ पर आचार्य बड़ी सुंदर टीका देते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन पूरा ज्ञान सुनने के पश्चात भगवान के सुंदर मुस्कुराते हुए मुखार बिंदु का दर्शन करते हैं, और अब कहते हैं कि मेरे सारे मोह नष्ट हो चुके हैं. That means my illusion is gone and I have regained my memory. And after saying this, he is seeing Lord Krishna, whether Krishna is happy, but Krishna is not. Krishna is still in the same serious place. तो ये कहने के पश्चात वो कह रहे हैं कि मेरे मोह नष्ट हो चुके हैं, मेरी स्मृति वापस आ गई है, शायद भगवान प्रसन्न होंगे. फिर से भगवान बोल रहे थे सब चीजें मैं सुन के अब ये बोल रहा हूँ कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं भगवान की ओर देखा तो भगवान का मुखार बिंदु वैसे ही धीरे था. Because that is the purpose of Bhagavad Gita, to dispel our ignorance. Now already the goal is achieved and Arjuna is expressing, but still Krishna is not happy. क्योंकि यही उद्देश्य भगवद गीता का कि हमारे मोह को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना. भगवान ज्ञान देने के पश्चात अर्जुन को लगा कि अगर मैं समय कहूंगा भगवान प्रसन्न होंगे, फिर भी उनको लगा कि भगवान प्रसन्न नहीं. So now Arjuna want to make Lord Krishna happy, so he gives the second statement, the second line, saying, this all happened because of your mercy. Tat prasadat maya chita. Because this is not by my efforts, but in bhakti everything is by Lord's mercy. This is because of your mercy I have received this knowledge and I have regained my consciousness. और तब आगे कहते हैं इसी शास्त्र में, इसी श्लोक में कि भगवान कि ये सब कुछ जो हुआ है, मेरा जो मोह नष्ट हुआ है, स्मृति वापस आई के लिए आपके प्रसाद, आपकी कृपा से. क्योंकि भक्ति में हम लोग कुछ भी प्राप्त नहीं करते, सब कुछ भगवान की कृपा से हम ग्रहण करते हैं. After second line, he is seeing again Lord Krishna. Lord Krishna is not showing any expression. So now Arjuna thinking what to tell more. I already told, I have regained my this one clarity, and it's all because of your mercy. What else to tell more? Still he is not able to make Krishna happy. इसके पश्चात भी भगवान प्रसन्न नहीं है, तो अब सोच रहे अब मैं क्या करूं. अर्जुन बोल रहा है मैंने इतना भी बोल दिया, आपके पास सब कुछ हुआ है, मोह दूर हो गया, जो आपने ज्ञान दिया सब समझ में आ गया, मोह दूर हो गया, आपकी समझ में तैयार हूं, अब क्या सॉरी मेरी स्मृति से वापस आ गई, अब क्या बोलूं. So then he is composing the third line. Arjuna is saying, Sito Asmi, that is Sandeha. That means I am now situated like as a Kshatriya, and I will be, you removed all my doubts,
So I am regained in my as a in the situated in the session here. तो कह रहे हैं कि अब मैं अपनी स्थिति में वापस आ गया, अपनी स्थिति में, अपने वर्ण की स्थिति में हूँ, और अपनी स्वाभाविक स्थिति क्या है जीव की, कृष्ण के दास के रूप में। अब मैं स्थिति में वापस आ गया हूँ, इसलिए दास होने के नाते आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, अब तैयार। Still, Krishna, there is no any smile on his face. और अभी भी भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु पर मुस्कान नहीं है। Then he is giving that last Brahmastra. Karishe Vasnantava. So he's telling, I shall execute order as per your according to your instruction. Then he is seeing Krishna is coming. और अंत में कह रहे हैं कि अब मैं जैसे आप ये वचन है उसको पूर्ण करने के लिए, उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए। तब भगवान मुस्कुराते हैं। It is very interesting that now Krishna is smiling. So if at all we want Krishna to smile in our lives, he becomes happy when we say Karishe Vasnantava. Like, it's not that ignorance is removed, we are situated, but we should act according to the Lord's instructions, according to Lord's word. तो अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो उसी प्रकार हम लोग को अगर भगवान को पसंद करना है, भगवान के चेहरे पर मुस्कान लानी है, तो केवल हमारे अज्ञान दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए, स्मृति वापस आ जाए, जान जाए कि भगवान के दास हैं, ये जानना ही काफी नहीं है। लेकिन हमको भगवान को किसी के लिए कुछ करना होगा और उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, तब भगवान। And what does the Lord want? He has already expressed his instructions through Guru, Sadhu and Shastra. We need to chant in Kaliba, Hare Nam, Hare Namaiva Kevalam. The Lord of Hello, Nateva, Nateva, Nateva. This Lord's instruction that we become his devotee, Manmanava, Madhokto, Madhyaj, Nam Namasu. And we follow these four regulative principles, which is coming through the Parampara. All these things, when we follow, these Lord's instructions coming through the proper channel. तो भगवान क्या चाहते हैं हमसे, क्या हमें करना उनके लिए? ये गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमें भगवान के नाम का जप करना, नियम का पालन करना, और ये सारे जो विधि विधान बनाए गए हैं, ये हमको बिल्कुल प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में भगवान की जो द्वारा जो उनकी अपेक्षा है वो हमें याद होता है और वो। When we sincerely follow, then the Lord actually smiles and Lord becomes happy. Yasmin Tushte Jagat Tushtam Samsiddhi Haritoshna. जब हम गंभीरता से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने से पूरा जगत प्रसन्न हो जाता है। और यही सभी मनुष्य, विशेष रूप से मनुष्य में हम सबका परम कर्तव्य है। Because in today's world, everybody, there are a lot of problems. There are political problems, family problems, problem in the job. So we all think these problems are because happening due to some situation. But Acharya says all these problems is because of one thing, that we are lack of Krishna consciousness or Krishna consciousness. Because we are not pouring the water to the root. That is the result of all the problems. तुम देखते हैं कि समाज में बहुत समस्याएं हैं आजकल, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, कई तरह की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं चल रही है समाज में। लेकिन इन सभी समस्याओं का आचार्य लोग एक ही कारण बताते हैं। हम लोग कई कारण से पारिवारिक, आर्थिक, शरीर की वजह से कई समस्याएं, लेकिन आचार्यगण बोलते हैं कि इसका कारण, मूल कारण क्या है? भगवत भावना की कमी, कृष्ण भावना की कमी। Because we are existing here, we are an Amsa of Krishna. The purpose Krishna expanded is to have a loving reciprocation. That is the primary and only purpose the Lord has expanded himself to have loving reciprocation. In love, giving love and receiving love, the Lord experiences happiness, the Jiva experiences happiness. And when we fail in that, all the problems starts coming out in various forms, like the problem, political problem, economic problem. So many problems come because of this one reason. We are not fulfilling the purpose for which Krishna has created us in this universe. क्योंकि भगवान, हमको समझना पड़ेगा कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग आए हैं, क्यों प्रकट हुए हैं। भगवान में एक से बहुत भगवान हुए क्यों? प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो वो कार्य छोड़ करके हम कुछ भी करेंगे, ये हमारी समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि जिस उद्देश्य हमको बनाया गया वही हम भूल गए। So let's Radha Swami Maharaj says that
love, we can experience that. Here we are always hankering for love, whether in whatever relationship, whether it is male, female, or mother and child, that love is the prominent factor. So that shows that love is already ingrained within them. This reflects that the soul is hankering for that love for the being Lord. परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बताते हैं कि चूंकि जीव जो है वो अपने वास्तविक माता पिता राधा कृष्ण को प्रेम को छोड़ करके हम यहाँ पर आ गए हैं और इसलिए हम सब जगह पर उसी प्रेम की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर सभी संबंधों में, माता पिता में, भाई बहन में, सबके अंदर उसी प्रेम के लिए तुष्टि मिल रही है, क्योंकि वो प्रेम जीवात्मा का स्वाभाविक स्वभाव है कृष्ण से प्रेम करना। We are also working here. When we go for vacation, we feel so happy. But when we are going for a job, we are not so happy. Right? But when we are going, everybody smiles when we are departing from the airport. But 45 days goes very fast. At the moment we come back, we feel very sad when we see the same airport. Because that love, we are always hankering for love. And that love we get, as of now, we get from our family members, our family. This is the powerful satisfaction you get when you are exchanging love and receiving love. तो भी कहना चाहते हैं कि सब लोग जाते हैं, जब घर जाते हैं छुट्टियों पर, बड़े प्रसन्नों के जाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन लोग घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे और बड़े तेजी के साथ वो समय बीत भी जाता है। फिर जब वापस आते हैं तो यहाँ पर इतना आनंद नहीं आता है, परिवार को छोड़ के आते हैं, फिर काम करने के जाने के लिए इतना आनंद नहीं आता है, क्योंकि परिवार से भी हमको प्रेम मिल रहा है और जीवात्मा उसी प्रेम के लिए, प्रेम की भूखी। And if you see in Facebook, people when they are departing, they post photos. I am going back. But when they arrive, rarely people don't put that. तो जब जाते हैं लोग तो अपना फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैं जा रहा हूँ, आने जा रहा हूँ, और जब आते हैं तो कोई पता नहीं। One time Maharaj was saying that he was traveling in a flight, and the person who was sitting near him, he asked, Swamiji, can you explain Gita in just one line? Because I don't have much time. I want to know in essence. Like when Maharaj was saying that Gita, just you want to express, एक व्यक्ति हंसता है, एक व्यक्ति रोता है, यही गीता है। Then if you ask why that one person is crying, one person is smiling, then we can explain the whole Bhagavad. Krishna is smiling and Arjuna as a Jivatma is crying. Then we can explain why he is crying, why the Lord is smiling. एक बार महाराज जा रहे थे, महाराज फ्लाइट पे, वहां पर उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा था और बोला, देखिए स्वामी जी, मेरे पास समय बड़ा कम है, आप गीता की आपको टीचर है, एक आदमी बताइए गीता का सार क्या है। तो महाराज ने बोला कि गीता का सार ही कोई बताया हिंदी बड़े अच्छे से, एक व्यक्ति रोता है और एक व्यक्ति हंसता है, गीता है। और क्यों रोता है, क्यों हंसता है, इसको जानने के लिए पूरा गीता का अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से उसमें जीवात्मा किस प्रकार से रो रही है और किस प्रकार से भगवान जो है। Because in this material world, there's a very famous saying, man proposes and God disposes. Nothing goes as per our plan. Whatever we are, maybe the most wealthiest person, we are most strongest person, whatever Aishwarya we have, nothing goes as per the plan. Like in South, there is a very famous actor, we all know, it's called Rajinikanth. Yes, whatever a man can imagine in himself, he has everything. He's celebrated in India. He is so much wealth, so much famous, and everything. Still, he is 75, he is acting that nothing. But he goes every year to Rishikesh, Haridwar, because he is not able to get peace of mind. कभी कभी कि इस जीवन में हम देखते हैं सबके पास सब कुछ होने पर, सभी ऐश्वर्य को होने पर भी शांति की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। क्या जितने हैरान हो जाए, सब कुछ आने पर भी, तो वहाँ तरीके से जानते हैं आप सब रजनीकांत जानते हैं। I think only best brother does not know it. Used to come in very तो उनके पास सब कुछ है, तो बहुत धन कमाया, वहाँ तो उनकी पूजा की जाती है तमिलनाडु में। उनका अभिषेक किया जाता है। उनके पास में इतने उनको चाहने वाले लोग, लेकिन इसके पश्चात भी
उनको शांति नहीं है, इसलिए वो हर साल कुछ दिनों के लिए एकांत में जाते हैं और वहाँ अपने आप को शांति का सत्ता करना चाहिए। Unfortunately, he was associated with Krishna consciousness in 1975 or 4-5 years. He was chanting, and he has given some interview about the beauty of Hare Krishna Mahamantra. But somehow his family members pulled him. If you go, then your life may be good. Fortunately, he was in Krishna consciousness for some time, and then back to Lord Medicine, his interview has come. He was chanting, he was very much closely associated with devotees. I have seen the article also. But somehow his family members pulled away from Krishna consciousness, saying that maybe he will drift away from the family. But still his hankering was there, and he has now taken a different path of meditation and other things. Because his hankering is always there. And whatever a human being should aspire, the materialist person, he has everything. More than what he can aspire. But still, spiritual life is very important, and he always, wherever in speech, he talked about importance of connecting to God. तो कुछ समय तक वो अंतर्राष्ट्रीय के संपर्क में थे कुछ समय तक, लेकिन उनके परिवार को लगा कि वहाँ से जाएंगे तो उनका उनके परिवार वालों से जैसे अभी धन कमा रहे हैं उतना साथ नहीं कमा पाएंगे तो हम लोग भोग नहीं कर पाएंगे, इसको भेज दिया वापस वहाँ पर। और अभी भी वो किसी ऐसे संस्था से जुड़े हैं शायद, क्योंकि मतलब हमेशा कुछ न कुछ ऐसे आध्यात्म के बारे में वो बातें करते हैं, और कभी बात होती तो बोलते नहीं सबको वो कि आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। Now a little more speak about Rajinikanth, then instead of Krishna consciousness will become Rajinikanth. Stop here, we get prepared for Krishna consciousness. तो देखो रजनीकांत से तो यहाँ के एक्टर एक मूवी के भारतवर्ष के उससे हट करके हम लोग पूरे जल के जगन्नाथ और जल के एक्टर उनको बताते हैं। So this is very important that it should be the scriptures were that illusion is created by Krishna, that in material world you cannot be happy. That's why I give you an example. Whatever we have. Because in illusion we think that maybe if I have a job, maybe if I have family like that, maybe if I have something like this is how the mind thinks. The other side of the grass always looks green. So people who are working in India, they want to come abroad. They want to come to Middle East. From Middle East, they are not happy. They want to go to America, London. And after going to America, London, still they are not happy. Then they want to go to Mars or Moon and see what is there. तो लोग जो है खुश होना चाहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि तभी इसी मुंह को दूर किया जा रहा है कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो लगता है कि ये शायद करो शायद ये करो प्रश्न होगा। जैसे घास जो होता है कि उसका दूसरा भाग सबको दिखता नहीं, हरा भाग दिखता है। तो वैसे बहुत से लोग जैसे हम सब देखिए, हमने प्रयास किया कि ठीक है भारत में कम धन का है, धन कम है और खाड़ी देश में जाएंगे तो धन ज्यादा मिलेगा, तब आंध्र आएंगे, यहाँ पर आ गए। बहुत से लोग को यहाँ पर फिर शांति नहीं मिलती थी, फिर यहाँ से बाहर पाशाद में जाते हैं, अमेरिका लंदन में जाते हैं, वहां पर जाने के बाद भी शांति नहीं और कुछ पाने की प्राप्ति नहीं। तो फिर सोचते हैं कि अब जाया जाए, चंद्र पे जाया जाए, मंगल पे जाया जाए, उसके लिए प्रयास चल रहा है, कहीं पर भी शांति। In reality, we have to take this knowledge from Bhagavad. We should thoroughly convince in material life, materialistic life. Ultimately, if you are not Krishna consciousness, it is going to end in frustration and regret. तो हम सबको इस बात को निश्चित रूप से अपने मन में बिठा लेना पड़ेगा, गांठ बांध के बिठा लेना पड़ेगा कि भगवान ने साफ साफ कह दिया, जिसने जग को बनाया है वही कह रहे हैं इस जगत में आप सुख की अपेक्षा मत करो, शांति की अपेक्षा मत करो। विशेष रूप से अगर आप भौतिकवादी जीवन में जीते हैं तो आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। Some claim that this is very pessimistic way we are seeing life. It is not pessimistic. When we say, when we are traveling in a boat, if the boat is having a hole, it is not pessimistic. Boat is having a hole, it is a realistic. So we know that we have problem, we have to discuss on that so that we get wisdom and we can live properly our life. कई बार लोग कहते हैं कि आप तो बड़े निराशावादी लोग हैं, संसार में आए हो निराशा होकर बोल रहे हैं नहीं यहाँ पे कोई आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। ये कैसी बात है? आशावादी लोग पसंद हो, आशावादी बनो, करते रहो, कुछ आनंद आएगा, आज कल आएगा, परसों को वैसे मुझे लगे ऐसी बात नहीं। और कोई नाव है, नाव जा रही है नदी में और नाव के अंदर छेद है और उसमें पानी आ रहा है, तो ये कहना कि भाई ये नाव डूबने वाली है, निराशावादी नहीं, ये सही बात है, ये तथ्य है, बताना पड़ेगा कि नाव डूबने वाली है, समझना चाहिए हमको और समय से पहले से निकलना पड़ेगा, ये डूब जाए। That hole in the boat is Janma Mrityu Jara Anadi, and we know that miseries are there, Adhyatmika, Shadi, Bhautika, Adhidevika,
And also we have so much materialistic dangers every step. Param param, ram, Mahesh. So all these things are there. We cannot deny all these miseries are there. उससे भगवान गीता में बता रहे हैं कि देखिए आप दुखों को समझिए आप जन्म मृत्यु और तीन क्लेश बोलते हैं तीन क्लेश ये दुख निश्चित रूप से हमको इसका दर्शन करना पड़ेगा ये सही बात है. Now even if you moving away from Bhagavad, we see our own life, our parents, our grandparents, we are seeing now. They, from their childhood, they are growing their children very nicely. They are sacrificing their entire life. We are sacrificing. But we are seeing number of lives where when the grandparents, when they become old, hardly they are being respected or hardly they are being properly taken care. Their own children turn against them. Maybe you all, somebody of you see, but personally I have seen many parents who have given their entire life for their children. At the last stage of life, they see that they are not properly taken care or properly exchanged that love. So what else more proof is required than this? इसका बड़ा ज्वलंत प्रमाण जो है विशेष रूप से अभी के समय में हम देख सकते हैं जिन लोगों ने माता पिता ने अपना पूरा समय देते हैं पूरा जीवन दे देते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करने में और वो बाद में जब वृद्धावस्था आती है तो बच्चे को देखभाल नहीं कर रहे बच्चे कुएं पे बैठे हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं माता पिता सब लगा दिया उन्होंने और बाद में कुछ चीजों का ध्यान भी दिया है ऐसे देखो मिलता है सब देखा है यही है कि बिल्कुल हमारे समझ आ रहा है कि जीवन में अतः सुख नहीं मिलने वाला है. Especially you can see that when they are dividing the property, 90 majority there will be kind of harsh feeling between the brothers, sisters. It happens in almost every family, unless they are like the Vaishnavas who can know, who knows the whatever comes by God's arrangement, they'll be quiet. But normally materialistic people, even though they are very good brothers, sisters, when there is a property from their parents, there will be some kind of disputes. We have seen so many cases like that. And the parents get so much upset that they want their children to be together loving, but it does not happen. That's what I was saying, man proposes, God disposes. That's how this whole material universe is designed like that. तो विशेष रूप से जब जो माता पिता होते हैं जो अपने पुत्रों को जो बढ़ जाते हैं जब उनका समय हो जाता है जब वो अपनी संपत्ति का विभाजन करना चाहते हैं तो बड़ी समस्या है किसके हाथ पे क्या जाएगा और कभी कोई जो विभाजन करती है आजकल तो बहुत समाचार आता है मार रहे हैं उसको संपत्ति के लिए और माता पिता चाहते हैं कि हमारे पुत्र अच्छे से रहे सर्वत संतान अच्छे से रहे कदापि उन्हें संभव नहीं हो पा रहा है. On a lighter note, they say a joke. Poor people, they listen exactly to us and do exactly opposite to what we want. One is children, second is tailor, third is God. If whatever you pray, you want to be happy here, you go to temple to pray that I want to be happy in this life. Then I'm everything, but exactly opposite. तो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप उससे कहेंगे वो बिल्कुल उसका उल्टा ही आपको प्रतिक्रिया मिलेगी. एक आपके संतान दूसरी जो आपके दर्जी होते हैं कपड़े काटते हैं माता जी हाँ कुछ करेंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा बनाने में और तीसरे भगवान उससे प्रार्थना करते हैं कि मैं आज लो भगवान कभी समस्या रूप गया एक कि वो तो दूर नहीं भाई एक और समस्या खड़ी है. That's why we say man proposes, God disposes. Very, very important thing. Prabhupada writes in Srimad Bhagavatam, I don't remember in one of the purpose Prabhupada writes that's why it is the famous proverb which said that man proposes, God disposes. The Prabhupada said that. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि हम बहुत कुछ भगवान से मांग सकते हैं विनती कर सकते हैं लेकिन भगवान उस पर बहुत कुछ तिरस्कार कर सकते हैं. Because his expectation from us is different. That's why he is disposing. क्योंकि उनकी अपेक्षा और उनको हमारा परम हित पता है इसलिए वो हमारी सभी ऐसी इच्छाएं जो हमारे हित में नहीं है वो सब तिरस्कार. So now what is the solution? Now we all know the problem. So the materialistic people also know this world is dukkha. So they also know, except few people who are very grasped the illusion. Everybody knows this world is not good place.
But people in Krishna consciousness, the advantage is they know the solution also. Other people do not know that. ये जो समस्या के बारे में आज हमने समझ लिया था, समस्या वो सबको पता है। यहाँ तक कि बहुत भौतिकवादी लोग हैं, उनको भी पता है कि बड़ा दुख है, बड़ा संघर्ष है। अगर बिल्कुल से बिल्कुल माया मिले है, उनको छोड़ दिया जाए तो अब ये प्रश्न आता है कि इसका उत्तर क्या है, इसका उपाय क्या है। तो केवल जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास इसका उपाय क्या है। Even after this corona, all the temples, the number of people who are coming to temples everywhere in India increased, but still they do not know what to do. जैसे कि कोरोना के समय में सब जगह पर मंदिरों में बड़ी भीड़ की संख्या में कोरोना का पश्चात, लेकिन फिर भी उनको अभी तक याद नहीं है कि हमको क्या अपेक्षा करनी, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए। So the solution, as a devotee, we know what is the solution. Now God will propose something, man will accept it. That will lead to happiness. तो क्या उपाय है कि हम प्रपोज न करें, हम नहीं कुछ न करें, भगवान जो दे रहे हैं उसी को बिना किंतु परंतु के ग्रहण किया, जो भगवान दे जीवन में सुख वही हमारे, तब हमारा जीवन सुख है। And God is proposing here what we are supposed to do in Bhagavad Gita. If we try to follow it sincerely, not everybody can go to the Paramahamsa level. Everybody has their own karma. Everybody has coming with different level of progress. But we are attempting sincerely from our heart to abide by the teachings of Bhagavad Gita. Definitely, it is said that God helps those who help themselves. और वो भगवान हमें क्या बता रहे हैं, जैसे भगवान क्या प्रपोज कर रहे हैं, ये भगवद गीता। तो भगवद गीता में भगवान हमको सब कुछ बता रहे हैं, किस प्रकार से क्या हमें करना चाहिए, हमारे हित के लिए क्या है, और इसको हम ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन सुख है। Srimad Prabhupada taken and this verse reference. Srimad Bhagavatam, 8th canto, 16th chapter, 22, verse number 22. Srila Prabhupada writes, in the beginning itself in the purport, it is said, man proposes, God disposes. Thus, a person may desire many things, but unless these desires are fulfilled by the Supreme Personality of Godhead, they cannot be fulfilled. So, it's very important. तो 8वें स्कंद के 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये प्रभुपाद जी स्वागत करते हैं। बहुत सी चीजें हम लोग विनती कर सकते हैं कि भगवान का नमस्कार कर सकते हैं, जब तक भगवान उसको अनुमति प्रदान नहीं करेंगे तब तक कितनी भी इच्छा कर ले वो पूरी नहीं। Now, God is proposing so many things here. Manmanavo, Masbhakto, Sarvadharman, Parityajya. So many things God is proposing. So we also know as devotees. But what is our challenge? तो भगवान कई चीज बता रहे हैं और उन्होंने जो वर्णन कर रहे हैं भगवद गीता को जानते भी, भगवान कह रहे हैं अपना मन लगाओ मुझ में और शरणागति हो मेरी। तो ये भगवान की आज्ञा पालन करने में हमको क्या चुनौतियां आ रही हैं, चुनौतियां आ रही है तो क्या चुनौतियां आ रही है उस बारे में। So that main challenge is coming as between the soul and God. There is a central challenge is actually a mind. तो भगवान और हमारे और भगवान के बीच में हमारा मन, प्रतिकूल मन है, वो बीच में बाधा बना। So this mind is what is actually our mindset, how we are grown up from our childhood. Like maybe we pray to a lot of demigods. Then stopping the worship is a challenge. Maybe if you are so lazy from childhood, then to become, like getting up for Mangala. So many things our mind, like there is an example that the elephant is tied with a small chain when it is in childhood. But the elephant grows. The elephant, it's one of the strongest animals. The elephant, if it will pull, the chain will get destroyed, cut. But the elephant, because from the childhood, the chain is there. If you see in the temple, it will not move out of the boundary, thinking that this chain is secure. जैसे एक व्यक्ति बचपन से हाथी होता है, हाथी बड़ा शक्तिशाली जानवर है, लेकिन बचपन में उसको बांधते थे और बचपन से बांधते बांधते बड़ा हो जाता है, जानवर बड़ी आसानी से तोड़ सकता है चेन को, लेकिन बचपन से बांधने के कारण उसको लगता है कि नहीं ये मेरी सुरक्षा के लिए। तो आप देखिए मंदिर में कभी जाएंगे तो वहां पर हाथी वैसे बांधे रहते हैं, कभी हाथ छुआ लगाता नहीं है। This mind, this is called mindset. So we also have some mindset apart from Krishna consciousness. Whatever mindset we are having, which is against Krishna consciousness, is not helping us to progress in Krishna consciousness. उसी प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जैसे कि बताया
जैसे कोई लोग सुबह नहीं उठना, इस प्रकार की स्थिति, और तो वो जो स्थितियां हमारे मन में हैं जो भगवान के भजन करने के लिए प्रतिकूल, उस मन स्थिति वो हमारे बीच में चुनौती बन जाती है। ऐसी मन स्थिति जो हम लोग मतलब जन्मों से उस प्रकार की मन स्थिति में रहते हुए आए। If we are today happy or sad, it is only because of the mind. That's why they say face is the index of the mind. और आज हम प्रसन्न हैं या दुखी हैं, ये भी हमारे मन का ही खेल है। That's why Krishna is. इसलिए लोग बोलते हैं कि मन हमारे जो जीवात्मा है वो मनुष्य का दर्पण है। That's why Krishna is stressing this point that one who has controlled his mind, the mind becomes his friend, and one who has failed to control his mind, the uncontrolled mind is the enemy of the soul. इसलिए भगवान कहते हैं बंधुरात्मा कि जो छठ में ध्यान करते हैं भगवान कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो मन उनका मित्र बन जाता है, और अगर अनियंत्रित मन जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। And I consider like these children, they are very fortunate because they get this knowledge very early. तो ऐसे जो बालक हैं, बालक नहीं है, पूरे साधु भाई Carry forward from previous birth. तो ऐसे बालक में बड़े भाग्यशाली है कि बचपन से वो उसको वसंत प्राप्त करते हैं, भगवान के नाम का स्वागत करते हैं, साधन पा रहे हैं, खेलते हुए सब मिल रहा है, पर प्लेइंग में करेंगे। So if we get this knowledge earlier, Kaumara Machre Prajna Dharmam Bhagavad, if we get this knowledge earlier, we are like more fortunate because we don't get the unnecessary complexities in life. Our life becomes very simple, mind becomes very peaceful, and we get we don't complex our subconscious mind because our mind is rooted in God. तो अगर बचपन से ही हमको ये ज्ञान मिलता है, बड़ी सौभाग्य की बात है। इसका मतलब उसी प्रकार की मनस्थिति में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तब वो मनस्थिति प्रतिकूल नहीं बनती है, आगे चुनौती नहीं बनती, बड़ी आसानी के साथ, सरलता के साथ में हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं। Because it is now for us, it is better late than never. So whatever stage we get this Krishna consciousness, we pray at the lotus feet of the Lord, Srila Prabhupada, Guru Maharaj, that we get this clarity, strength to practice in a proper mood without any Vaishnava pride, and we progress in Krishna consciousness with proper attitude. इसलिए हम लोग को बड़े ही सावधानी पूर्वक ये प्रार्थना करते हुए भोजन क्षण कमरों में कि हम लोग बड़ी गंभीरता से बिना कोई अपराध की और हम लोग इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। And in this connection, there is also said that with the mind, there is also one more challenge called habit. So interestingly, they say habit is very, very difficult to, even for devotees. Habit is a very big challenge. I have personally seen how this habit is playing very crucial role in either developing Krishna consciousness or coming down. So in this, और इसी प्रकार जो है आदत जो हमारी होती है, आदत वो भी हमारे मन के ऊपर ऐसी छा जाती है कि वो भी हमको या तो बहुत ऊपर ले जा सकती है या तो बड़ा पदम का कारण हो सकती है। if somebody has developed a habit of constantly chanting the Hare Krishna Maha Mantra, it will help him greatly. अगर कोई ये आदत डाल ले कि हम सदैव भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जब करेंगे, तो उनको बड़ा ही इसका लाभ मिलेगा। If you see the word habit, it is interestingly said if you remove the word H, then still a bit will remain. तो अंग्रेजी में मतलब हैबिट HABIT, डबल BIT होता है, तो एक निकाल देंगे आप HABIT, तो तभी बिट रहेगा, मतलब थोड़ा सा फिर भी रह जाएगा, मतलब H निकाल दें तो पहला। Then you remove A, bit will remain. और अगर A निकाल दें आप दूसरा अक्षर निकाल दें तो फिर उसके बाद तभी रहेगा, बिट रहेगा। अभी B, if you remove B also, और B निकाल दें तो ये बचेगा, इसका मतलब फिर भी ये रहेगा। So whatever bad habits are also very. That's why I told if you get it in the early age, you can avoid lot of unnecessary problems. तो इसीलिए बताया गया कि शुरुआत से हम लोग इस प्रकार की आदत डालें, मनस्थिति ऐसी हो कि ऐसे जो प्रतिकूल जो मनस्थिति है वो प्रवेश न कर पाए, नहीं तो बहुत समय इसी को सुधारने में लगता है। That's why Prabhupada Maharaj says, Kaumara Mati, as soon as early as possible, we have to get this knowledge and practice. इससे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको इसको अपनाना चाहिए बचपन से। Prabhupada Maharaj recommends that from starting from the age of 5, Kaumara. So from the beginning of 5 years, of course we start from early also, we start. But when they are conscious and they are able to digest chanting and all those things, at least from the age of 5. तो
कहते हैं कौमार्य की अवस्था से कम 5 वर्ष का से शुरू करना चाहिए। और उसके पहले से भी देखिए व्यवहार संस्कार होता है बच्चे बचपन से 5 साल से आप चेतना विकसित होती कम से कम देखिए तब से वजन करना चाहिए। Now to handle this mind, there is only one formula we have. केवल एक ही हमारे पास उपाय है इस मन को संभालने। You all know that, you are all exalted Vaishnavas, you know the formula, mantra. और आप सबको पता है वो मंत्र क्या है। Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it is a very, very powerful process, and it's a priority mantra. Means a mantra means that formula which delivers your mind from all worries, anxieties, and connects you to the Supreme Lord. That is called mantra. And this is not mantra, this is called as Mahamantra. It's a greater potency. जो मन को ताड़ता है उसको मंत्र कहते हैं और ये मंत्र नहीं ये महामंत्र है अर्थात बहुत शक्ति के साथ। Because we need something very powerful in Kali Yuga, because we are normally like buffaloes. If you see buffaloes, they are on the road. If you go and tell the buffalo to move, it does not move. If you see in the road, they make big traffic jam. Somebody has to literally get down from the car, go and hit, then also it will not move. Then you will see nearby some stick. You will take and it will hit, keep on hitting. Then slowly it will see who is hitting me. So Kali Yuga souls are like that. तो मुझे बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि कलियुग की जीवात्मा कैसी है भैंस की भैंस जब रास्ते पर होती है गाड़ी आ जाएगी गाय भाग जाएगी भैंस नहीं खावा पीने की भैंस के आगे बजाओ में वैसा करती है तो बजाती रहती है समझ नहीं आता जब कोई निकले नहीं और मारना शुरू करे तब नहीं खाने की तो कोई निकले लेके आने लग जाए डंडा से मारना शुरू करती है तब देखती कौन मार रहा है वही स्थिति हम लोग कर रहे हैं। The same experience now I had when I am removing my vehicle. So one person was blocking the access. He was seeing something like that. Decently I put horn one time, second time, third time. He did not even see like this. So what I did, then I put the horn continuously for 3 minutes, 2-3 minutes. Then slowly he saw what is happening around him. Now, just now 6:45. Today, coming. तो देखिए अभी आते समय मेरे गाड़ी के सामने किसने गाड़ी पार्क करके और वो अपनी गाड़ी में बैठ मोबाइल देख रहे हैं तो देखो कई बार हाँ जी 2 बार 3 बार आते देखिए अपना मोबाइल में बिजी है वो। उसके बाद में बहुत देर तक लगातार 3 मिनट बातें रहे हाँ तब जाकर देखा कि कहाँ से आवाज आ रही है तो देखा कि पीछे कोई नहीं आ रहा। This is Kali Yuga. So they say an interesting story that there were 4 son-in-laws in the home of this story. You know that story? 4 son-in-laws. You know the story? So they were invited, father-in-law invited for Diwali. We have Diwali now, so especially newly married. So it's honestly so. So the father-in-law normally invites their home. They make nice feast and they take care of the son-in-law. So all these 4 son-in-law went to the home, and they were having very good treat and those things. The son-in-law became very happy. So we get a very nice feast here, and they were staying. But they say probably whatever feast 1 or 2 days only you will get. After that, you will slowly start losing respect wherever we stay. 2-3 days. So in that way, this son-in-law they have become very comfortable with the feast. They did not go back to their home, and they were staying there. So then the father-in-law saw how to vacate them from the house. 4 people, not one. Difficult for him also to manage. Okay, we finished that. Yes. Then what he did first day, whatever the feast he reduced the quantity. A simple sabji dal. Then the first son-in-law understood. So not good to stay in that. So then slowly he told his wife, let us go. Tomorrow we pack and go. Because I am not getting respect here in your house. Then 3 son-in-law, they told at least to child will die. Okay. So they 3 were very strong. Then they were taking. And father-in-law saw what to do. Then he cut that and he made little more simple also, without sabji. Like that, second also left. Now he's insulting me. No sabji means that's not good. Then the third son-in-law was still strong. Then third one also, then after he stopped rice also, he was giving only like liquid juice or something like that. The third also left. The fourth was
very strong, like buffalo. So he was staying there. Told whatever, I will not go. At least I get a good place and things stay. Then the father-in-law, after 1 or 2 months, he became very irritated. Then he took stick and he beat it. Then he asked, why you are beating me? Then told, why you are sitting so you don't want to go back to your home? He said, you should tell me, no? And he told, all these things I am doing, you don't know that you should go. You should get the message. So Krishna also Dukkara Mashashatam through various ways he's giving so many things that this is not a right place to stay. So people who are in Satyuga, they understood quickly, they left by tapasya. After Kali Yuga, we are very slow. In spite of all the problems coming, we are thinking, we will stay. We will try to make it Dukkara. So we should get that message by whatever this Janma Mrityu Jara Vyam and Adhyatma Klesha Adi Bhautika Adi Devika. We should know that Krishna and Durga Devi is also having the freedom. We should know that Krishna does not want us to stay here. Krishna is inviting back. Come back to me. Sarvadharman Parityaja Mahekam Shrantam Tam Sarva Papi. So he's inviting back to our home. And we should be like a little bit sensitive that this world is not. But Prabhupada said it's not a place for gentlemen to be. Prabhupada's Guru, I think Guru Maharaj said, of this the own ways, Maharaj. He said, this place is not for a gentleman to be. So we should get that message, and we have the solution, we have the chanting, we have wonderful devotee association, and we have all the platform, more better than our India, where we can peacefully practice Krishna consciousness. We should take advantage of it. Pray to the Lord, pray to the Vaishnavas, that they always bless us, that we may not deviate from this path, and always stay in association, get inspiration, and practice our sadhana sincerely. Please the Lord Krishna. By pleasing Lord Krishna, we can be happy, we can make others happy, we can also go back to Krishna. कोई बता रहे था कि एक बार ससुर जी थे उनके 4 दामाद थे, तो 4 दामाद आगे दिवाली को घर पे बुलाया, उनको कर दिया। आज तो 4 दामाद ने प्लान बनाया कि अब यहाँ समझाएंगे ससुराल में रहेंगे। ससुर कह के आते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जाना चाहिए लोगों को, कितने बैठा क्या हो रहे थे। पहले दिन के दूसरे 2 दिन के बाद क्या किया उन्होंने, जो खत्म लोग बताना चाहते माई जी घर पे आए थे, अब कुछ चीजें उसमें कम करना शुरू कर दी। तो एक उसमें समझदार था, समझ गया जब ठीक से स्वागत नहीं हो रहा है तो किसी को बोले कि भाई अब यहाँ चलना चाहिए, समय उठाए चल। लेकिन बाकी 3 लोग तो करने नहीं चाहिए, कुछ चीज हमें बाकी तो मिल रहा है। फिर करते हुए दूसरे दिन 2 दिन के बाद और कम कर दिया, एक सब्जी कम कर दिया। तो फिर दूसरे वाले से समझ गए कि ज्यादा डिमांड थे, बाकी लोग कहाँ से निकलना चाहिए वो भी निकल गए। फिर भी 2 बजे थे कि कम से कम चावल तो मिल रहा है, कोई बात नहीं आएगी। ऐसे करते हुए तो चावल भी बंद कर दिया, खाली बस की लिक्विड रख शुरू कर दिया, तो खाली दाल वाला। तीसरा वाला वो समझ गया, वो भी निकल गया वहां से। चौथा वाला बोला कि देखो हम कहीं नहीं जाएंगे, अब आ गए खाने को चाहते कब गिरी पड़े रहती। ससुर भी परेशान हो गए क्या है, तो सबसे लगे ये नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। डंडा लाया, उसको पीटना शुरू कर दिया। तो बोले क्यों पीट रहे ससुर जी, क्या बात है। कहीं कब तक पड़े रहोगे, कब जाओगे अपने घर। तो मुख से बोले कि जाओ, तुम चले जाएंगे, इसलिए जाएंगे। आपने बोला ही नहीं। उस प्रकार से हम लोग भी इस कल में भगवान इतना यहाँ पर दुख आ रहे हैं, समस्याएं आ रही, जन्म जला जा रही, तीनों क्लेश मिल रहे हैं, स्कूल से पदम पदम विपदा मिल रही है। ये सब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भगवान चाहते हैं निकलो यहाँ से, इस संसार से निकलो। सब प्रकार के लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं उसकी जैसे वो ऐसे प्रवृत्ति उसको भी कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति है, भक्तों का संग है, भक्तों के संग में यहाँ पर भारतीय अच्छी स्थिति मानी है। यहाँ पर अपने और कुछ कारनामा है हमारे पास, अपने कार्यों करते हुए आए, उसके बाद भक्तों के संग में रहते हुए अपनी चेतना को ऊपर करने की, भक्तों के संग में भगवान के नाम पार्षद में रखी, पार्षद में रखी और इसी माध्यम से कृष्ण को पसंद कर पाएंगे। जब कृष्ण पसंद होंगे हम सब I am not qualified, neither I am purified, but because of devotees association I am practicing whatever little bit, but I aspire that I should do better. So if at all I
have done any offense, please forgive me. But I always seek the blessings of all the assembled Vaishnavas who are constantly guiding me, supporting me, nurturing me in Krishna consciousness. Especially I would like to thank all the devotees because I am getting so many instructions or guidance from, I get some inspiration also. So I would like to thank. And also I would like to say that many people are relocated from here to India, but they are saying it's very challenging to follow in India or other Krishna. Means so much commitments here. But here it is little more easy to practice. So that advantage till we are in Bangladesh, we can take most benefit in progress in Krishna consciousness. तो वो इंद्रमण के बोल रहे हैं कि मैं बहुत शुद्ध नहीं हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, सब जानते हैं कि जो भी इस अभियान में विकास लगे हुए वो सभी योगी बनते हैं और सबको श्रवण करना चाहिए, उसका संकल्प करना चाहिए। जो कह रहे हैं कि कुछ जानने वाले लोग यहाँ से निकले हैं भारतवर्ष में, वो लोग बताते हैं कि वहाँ पर बहुत चुनौतियाँ हैं, भारत में बहुत से कार्यकलाप हैं, नियुक्ति है वहाँ पर, जितनी सेवाएं हैं, मतलब पारिवारिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, इतना समय निकाल पाना भगवान के भक्ति के लिए संभव नहीं है जो यहाँ पर है। यहाँ पर हम उसका लाभ उठाएं, बड़ी गंभीरता के साथ समय को ठीक करें, बच्चों के संग उपाध्याय शिक्षाओं प्रदान करते हैं और गुरु और गुरुजन को। So thank you all for giving this opportunity. बहुत देखिए तो बिल्कुल अच्छे लगभग 1 घंटे के समय में बिल्कुल सुंदर रूप से बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत साफ साफ शब्दों में हमको भगवद गीता के I did not prepare much, but I think something Krishna inspired. I know this verse I have to speak. Then after that, whatever Krishna inspired came in between. It is for my own. Krishna is speaking to me also. I should also become serious. And to me, Nitya Matra, so we are on this instrument. So he is inspired to speak something. All the credit goes to Srila Prabhupada and Guru Maharaj, because without their mercy, everything we cannot sit here, we cannot discuss, we cannot understand Bhagavad Gita, we cannot get the strength to follow. So all the credit goes to Hare Krishna. तो शिल बाबा गुरुजन की सब योगदान है, उनका ही सब श्रेय है। क्योंकि तो कहने कि मैं कुछ तैयार नहीं किया था, मुझे पहले श्लोक पर बोलना है, तैयार श्लोक पर, लेकिन जो भगवान ने प्रेरणा दी वो आपने श्लोक में प्रस्तुत किया, अपने आप को स्वयं प्रोत्साहित करने के लिए और सभी को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये सारा श्री प्रभुपाद जी और Thank you all for listening, bearing with me. तो बड़े ध्यान को आपको श्रवण करते हैं, बहुत ध्यान के साथ कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप वो अच्छा हो सकता है। प्रभु जी का संग दुर्लभ है। Whatever I am getting from this. प्रभु जी की मानता है जो भी मैं हम लोग इधर इंस्पिरेशन होता है, प्रभु जी क्यों ट्रांसलेट नहीं करता है? हम लोग का कुछ गाइडेंस होता है, इंस्पिरेशन होता है, तो प्रभु जी का जैसे हम लोग हृदय से प्रभु जी की मानता है, सब जानते हैं। हम लोग सच से बोलने का है, इतना हम लोग भगवान का भक्ति नहीं करता है, लेकिन प्रभु जी के देख के हम लोग का थोड़ा इंस्पिरेशन आता है, थोड़ा अच्छा करने के लिए। तो कभी भी प्रभु जी का हम लोग प्रभु जी से बहुत सीखते हैं, नवाब होता है प्रभु जी जो है आप सब भी देखे होंगे और हम सब देखते हैं। कितने लोग यहाँ पर आए होंगे, शुरुआत में सब हमको देखते हैं, बहुत शुरुआत, लेकिन सेवा नहीं की है। प्रभु जी की बहुत विशेष सेवा है और बहुत अनुगत के भाव में सेवा करते हैं, कभी भी आगे नहीं आते, कभी भी जहाँ पर लाइन लगे होता है वहाँ पर नहीं आते, कभी लेकिन बहुत सेवा करते हैं। कई स्थानों पर भी इसलिए सही बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, सबको सही सही बता देता हूँ। समझता है कई जगह पर क्लास देते हैं, वो जो नए भक्त आते हैं उनको बहुत सहायता करते हैं और बहुत से गृहस्थों को यहाँ पर उन्होंने नोट रखा, वो दिखता नहीं लेकिन वो हर दिन व्यस्त रहते हैं सेवाओं में, बहुत सारे देते हैं। खुद का अध्ययन उनका बहुत गंभीर है, श्रवण प्रभु बोलते हैं कि किसी के बोलने से मुख प्रसाद से मालूम पड़ जाता है। शास्त्र में बताया गया कि कोई भक्त
वो कैसी प्रार्थना करते हैं, कैसे उनके मुख से शब्द निकलते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि वो क्या करते हैं, उनका धन क्या चल रहा है, श्रवण क्या चल रहा है, इससे मालूम पड़ता है। तो मुझे बहुत समय देते हैं प्रभुपाद जी के साथ संबोधन करने में, और इसी भक्तों की नाम से ऐसे भक्तों को श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। I see your blessing. Very great that you came here and inspired everyone. I'm very, very happy. आपको बहुत पसंद है? तुमको तो बहुत पसंद है। तुमको तो पसंद है। Yeah, being said of it. Yeah, able to get the inspiration. आप लोग सेवा कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग ऐसे सबको यहाँ पर बुला पा रहे हैं। Yes, sir. Quick question. Thank you so much for the nice presentation. Like you mentioned, a lot of difficulties devotees are going that they face in India. If you come across such things, kindly share more information like what exactly is Yes, actually, because lot of temples are there, and go there. Guru Maharaj are there. So in spite of that, why devotees think that there is a lot of difficulty in India? good question, Prabhu. Actually, different spiritual masters take give different instructions. Some spiritual masters may ask you to come for assisting their seva. In that case, you need to go. Sometimes spiritual masters say, like you said, and Srila Prabhu asking that you want to. So this is your Guru Direction. You be here. Because if now Prabhu goes to India, what will be happening to us? Because of Prabhu, we are getting so much association. So sometimes it is also required to be here. Because maybe Krishna's plan is that you should reach out to many people here. And it's not that every time you have to only think. India, maybe there are other devotees, but Krishna has a plan. Krishna has a plan. Who should be there up to what time? So, and Guru Maharaj, spiritual master, they also know. Sometimes being here is good. Sometimes maybe for you, maybe for your spiritual problem, Krishna thinks if you go to India, it is good, he will relocate you. That's Krishna. And people who are gone from here, who work here in Kanyadesh and they are settled back, when we speak to them, they say that when we were in Kanyadesh, we miss their association and we miss such kind of environment here. And here we don't, because in India you have so much other commitment from your relatives and you need to go for so many things. Yes, social things and which you don't have here. Even if you come from home, you only have one thing you can chant, you can read Bhagavatam. India, you know that. It's not easy like that. We come peacefully and sit. You have so much commitment. Yeah. So many. So that will actually impact our sadhana. It's not one. I'm not saying we should not go. Till Krishna is giving an opportunity, you can say. And one time Krishna will tell this finish for you. Now you can go back. Happily we can go there. But compared to there, here you have more favorable things, quiet environment. Because when your mind is quiet, then your sadhana is better. In India, if you have so many things, commitments, so many things, the mind will start working out to complete that. So naturally, the sadhana will be little bit. So, but if we have very good association associated with them, definitely there also be very much work. Like you are in the community of devotees and you have some seva in the temple, then definitely it is not going to be a challenge. But if you don't get that environment, then it will be challenging. When you were mentioning that here we are big fish in a small pond. After going to India, you will be small fish in a bigger pond. I understand what I'm saying. Big fish in a small pond. So everybody knows everyone. रोज हम मिलते हैं, सबसे इतना प्रेम मिल रहा है, इतना उत्साह मिल रहा है. वहाँ पर बड़ा हो गया है, मतलब फायदा हुआ. वहाँ पर बड़े तालाब में एक छोटी मछली बनी. Sometimes it's our mind, we have to change our mindset. Sometimes we are going and praying, we are watching. We have to understand this entire ISKCON is one. Otherwise, हम लोग भी थोड़े से बोर हैं. क्या हो रहे हैं? और expectation is increasing actually, right? तो हम बड़ी मछली बन के थोड़ी तालाब डालना चाहते हैं, बट वहां पे जाकर हमको छोटी मछली बनी बड़े तालाब में. समझ में बात? And we should adjust. It's not our question. See, our bhakti should go up to that level. Now, it's up to you, my God. We do not have expectation. आप यहाँ पर रखेंगे, आप बहुत प्रेम दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा
लड़ाई तो अपने अपरेंटली कर रहा है कि नहीं, फिर भी हमको सेवा करनी आती है। तो जहां पर भगवान की हमको लेके आएंगे वहां से दैट शुड बी आवर माइंडसेट। सो सेइंग ये स्टेटमेंट आप जो बोलते हैं मैं उनको समझाता हूँ, प्रभु आप जहाँ पर हैं वहां पर सेवा करिए, नहीं तो हमारी भक्ति कंडीशन हो जाएगी। कंडीशन की तरह इस पे भक्ति करूंगा मैं अच्छे से कंडीशन सब कुछ है और हर जगह पे स्तर में अलग होंगे, different circumstances, different setup will be there. But spiritual program, same everywhere. Everywhere we talk about people, Prabhupada and worship. हमको उसमें वो यहाँ पर नहीं जाना। So wherever Krishna is, we have to be ready. That's very valid. That wherever Krishna takes us, sometimes not India, he may take somewhere else. But the Vaishnava says, the Acharya, the poor, they say, heaven or hell we don't bother. We only want to get service. My disciples should follow everything, whether even or otherwise they are not. We always follow, sir. We always follow, sir. Chaplain should follow, we all follow. तो हम सब मिलकर प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर रूप से प्रभु जी का संगठन प्राप्त हुआ, बड़े अच्छे रूप से भगवद गीता के मार्मिक जो पूरा उसका सार है वो इकट्ठे हमको बताया और हम लोग के बिल्कुल व्यवहारिक जीवन है कैसे उसमें समस्याओं से समाधान निकालना है और कैसे इस स्थिति से निकल करके और सुखमय स्थिति में भगवान को प्रसन्न करने की कैसे प्राप्त हो जाए भगवान के द्वेष का पालन करते हुए ऐसी कॉल ऑफ ब्लेसिंग्स तो मेरी साधना फॉलो सब अपनी पवित्र भगवान की हमारी नाम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण Thank you all devotees. काफी समय के बाद